गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गाना शॉट। एंड गाना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हमारा दोबारा यानी तीसरे बार ये जॉइंट प्रोग्राम है पी गुरुज के साथ, और जिसमें हम सुपर पावर्स के बारे में बात करेंगे। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस चीज के लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री श्री अय्यर जी। गुड इवनिंग मिस्टर श्री अय्यर, वेलकम। आज आपने कष्ट किया है हमारे साथ ये प्रोग्राम दोबारा करने का। Namaskar, General Ravi Shankar ji. Always an honor and pleasure to be with you and also be able to get this thing streamed to all our audience also. Sir, it's such an honor. And this is such an important topic that we have taken up today. And viewers, please, wherever you are watching, whether it is Gunnershot or P Guru's channel, P do Gurus. like this video because we want to get the maximum effect. There's a lot of noise around this world. I think we need to look at what has happened in the past. Sir, over to you. Oh, thank you. What we'll do is today we'll see. I mean, what is a superpower supposed to be, right? Uh, देखिए, अगर हम देखेंगे तो सिविलाइजेशन रह चुके हैं। There have been many empires which have ruled the earth. ग्रीक सिविलाइजेशन है, मायन सिविलाइजेशन है, इरानियन सिविलाइजेशन, पर्शियन एम्पायर चल चुका है, और द ब्रिटिश एम्पायर एंड दिस एंड दैट एंड सो मेनी, हम बहुत सुन चुके हैं। इजिप्शियन एम्पायर, राइट। बट अगर इसका मुआयना करेंगे तो सुपर पावर्स कुछ चंद ही रहे हैं in the history of the world. So I did a little bit of research on this. फिर मैंने देखा, देखो पहले देखते हैं कि सुपर पर क्या होता है। एंड द सुपर पावर, इन माय वे ऑफ थिंकिंग, वी कुड हैव डिफरेंट definitions. It has to have military, technological and economic might. और ये जो शक्ति है, इट शुड बी फार डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सबसे ज्यादा होना चाहिए या बाकियों के बनस्पत ज्यादा होना चाहिए। इसके पास, एक सुपर पावर के पास, इट ग्लोबल कैपेसिटीज होना चाहिए टू स्टीयर, इन्फ्लुएंस एंड शेप इवेंट्स। उसके साथ साथ उसका ये क्षमता होना चाहिए पावर प्रोजेक्शन, ये अपना शक्ति को दुनिया के किसी कोने में, इन मल्टीपल लोकेशंस, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करे। क्यों? टू सेट इट्स वर्ल्ड ऑर्डर एज पर व्हाट द सुपर पावर थिंक्स। ये जो शक्ति है, इट कुड बी इकोनॉमिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल, या इट कुड बी ऑल्सो सॉफ्ट पावर, जैसे तरीके से डिप्लोमेटिक पावर हुआ, पॉलिटिकल पावर हुआ, कल्चरल पावर हुआ, ये भी हो सकता है। और इट शुड डोमिनेट अदर कंट्रीज, उसके बाकियों देशों के ऊपर हावी होना चाहिए। और अगर कोई किसी और देश से चैलेंज आया तो उसको रोकना की जरूरत है। और इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड ऑन द वर्ल्ड स्टेज। और कोई भी सुपर पावर लीजिए, इसके कोऑपरेशन के बिना कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ चंद आइडियाज क्या सुपर पावर होते हैं। इसके बारे में अगर आपका कोई राय है तो बताइए, नहीं तो हम फिर आगे चलेंगे। No, you're absolutely right, sir. If you look at the rise of France in the early 1800s under Napoleon, and then the British, and then the Americans, and now the aspirants such as China and perhaps India, you always see that all these factors that you mentioned, these are the ones that take center stage. I think what we should probably do, and I'm sure you have this in mind, is to try and maybe position where India is and where India needs to be called this. That's one thought. The same thing can apply to China also. And I think America became a superpower for various reasons, primarily two world wars. But that's just my opinion, sir. These are my 2 cents on this. या हम जरूर देखेंगे कि क्या चाइना सुपर पावर है, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि इंडिया को सुपर पावर बनने के लिए क्या क्षमता चाहिए, वो लास्ट में देखेंगे। पर हम पहले देखेंगे कि, और ये नहीं देखेंगे कि किस तरीके से एक देश सुपर पावर बना। हम सुपर पावर का मान लेते हैं कि भाई ये सुपर पावर है, और उसको हम विल एग्जामिन इट।
बाद में इसका भी चर्चा कर सकते हैं कैसे अमेरिका बना वगैरह, देख ले। आई एम ओपन टू एवरीथिंग। ओके, मैंने क्या किया कि दो पुराने सुपर पावर को लिया और तीन नए सुपर पावर को मुआयना किया। फ्रॉम देयर वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन्स, Yes, yeah. and these are the superpowers which have existed. No other power has been superpower the way these have been. तो एक एक का हम विल एग्जामिन एंड देन वी विल टेक इट फर्दर। ये दुनिया के सबसे पहला सुपर पावर जो है वो है रोमन एम्पायर। और ये जो मैप है ये दिखाता है कि 117 एडी में रोमन एम्पायर का क्या फैलाव था। अगर आप देखेंगे पूरा यूरोप, आधा यूरोप, सदर्न यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का आधा हिस्सा के ऊपर इसका कब्जा था। ठीक। और अगर हम आगे देखेंगे, इट वाज फाउंडेड इन 27 बीसी बिफोर क्राइस्ट एंड इट लास्टेड 5 सेंचुरीज। 500 साल चला ये। और ये इट इज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट सुपर पावर, और कोई सुपर पावर इतना चला नहीं। It had illustrious emperors and dictators like Caesar, Augustus, Hadrian, Antonius, Marcus Aurelius, और उसमें नीरो, कैलिगुला, टाइबेरियस जैसे विलन्स भी थे। ये बोला जाता है ना, when Rome was burning, Nero was fiddling. So such Right. type of people were also there. Okay. It held sway over the Middle East and Europe, ruling most major population centers and contemporary civilizations. इनका जो एम्पायर है ये सिविलाइजेशनल एम्पायर है। क्यों? इट इंक्लूडेड ग्रीस, इट इंक्लूडेड द इजिप्ट, इट इंक्लूड लिवेंट इज मिडिल ईस्ट, कार्थेज, एनाटोलिया एंड इटली। इट हैड फुटप्रिंट ओवर 60 मिलियन पीपल। और उस टाइम में ये बड़ा फैलाव था। द रोमन लीजेंस वर फेम्ड फॉर मिलिट्री डोमिनेंस। अगर हम इसका ये देखेंगे तो इसका मिलिट्री कैपेबिलिटी के वजह से इन्होंने इतना फैला पाया है। पर्शिया, द पर्शियन एम्पायर वाज द ओनली रियल कॉम्पिटिटर ऑफ द टाइम, बट इट वाज कंप्लीटली ravaged repeatedly. Okay, it had tremendous intellectual accomplishments, law, city planning, architecture and roads. अगर आप रोम में आज के दिन जाएंगे, वहां के रोड और वहां के कोलिसियम वगैरह के आसपास रोड्स वगैरह हैं, वो पुराने जमाने के रोड हैं, वहां तब से चले आ रहे हैं। राइट। रोड्स जो है, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोमोटेड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मेल डिलीवरी, उन दिनों की बात है, पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक एंड मिलिट्री मूवमेंट्स। तो जो आज हम सोच रहे हैं कि ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्यों कर रहा है, इससे हमें एक संकेत मिलता है। सिटी प्लानिंग वाज ऑल अबाउट हाइजीन विद प्लम्बिंग, सुएज डिस्पोजल, डैम्स एंड एक्विडक्ट्स। डेवलपमेंट, जो आज का डेवलपमेंट है, वो नया डेवलपमेंट कोई नहीं है। डेवलपमेंट शुरू हुआ ये रोमन सिस्टम के साथ। जिस तरीके से प्लान डेवलपमेंट तो था, डैम्स तो पहले भी बनते थे शायद। और रोमन आर्किटेक्चर आज तक हम देखते हैं जाके रोम में किस तरीके से उन्होंने ये आर्किटेक्चर बनाया। और ये जो टाइम है 500 साल, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द बर्थ ऑफ टू मेजर रिलीजन्स व्हिच आर डोमिनेटिंग द अर्थ टुडे, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। ठीक है ना? तो ये है पहला पहला सुपर पावर जो रोमन एम्पायर है। पर ये क्यों गिर गया? 500 साल चला, पर एक दिन अचानक गायब हो गया। हमें पता है ग्रीक एम्पायर का अलेक्जेंडर यहाँ तक आए, वो भी गिर गए, और उसके बाद ग्रीक एम्पायर भी खत्म हो गया। अगर वो चलता तो वो भी शायद सुपर पावर होता, अभी तो वो हम मान सकते नहीं। The Roman Empire collapsed because of over expansion and military overspending. ये एक रिकरिंग थॉट प्रोसेस है। कोई भी एम्पायर, कोई भी सुपर पावर जब ज्यादा फैल जाता है और मिलिट्री के ऊपर ज्यादा खर्च कर देता है, वो गिर जाता है। राइट। और इसका जिक्र आप पॉल कैनेडी का किताब है राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी ये राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स, उसमें भी ये जिक्र हुआ है। इसके गवर्नमेंट के अंदर करप्शन था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, इकोनॉमिक ट्रबल्स एंड ओवर रिलायंस ऑन स्लेव लेबर। राइट।
द इन्वेजन बाय बारबेरियन ट्राइब्स, जो इस एम्पायर के बाहर थे, ये सब बारबेरियन माने जाते थे. सो व्हेन दे इन्वाइडेड, द एम्पायर स्टार्टेड क्रम्बलिंग. द राइज ऑफ द ईस्टर्न एम्पायर, Constantinople, yani the combination of Persian and the Ottomans, right? North से Germans, the arrival of the Huns and migration of barbarian tribes. जो नॉर्थ यूरोप के उन दिनों में माना जाता था, वो सब बारबेरियन थे. अच्छा, क्रिश्चियनिटी जब फैला था, इनका लॉस, देयर वाज अ लॉस ऑफ ट्रेडिशनल रोमन वैल्यूज. उससे क्या है, ये खोखला बन पड़ गया. और इनके जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वीकनिंग ऑफ द रोमन लीजन्स, उसकी वजह से द ग्रेट रोमन एम्पायर गिर गया. पर फिर भी देखिए 500 साल चला. तो इसके बारे में अगर आपने कुछ सवाल पूछना है या कुछ चर्चा करना है तो करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट एम्पायर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट सुपर पावर के बारे में बात करेंगे. You are absolutely right about military being extended. See, the problem with the empire was that they had such a large army that they needed to keep it occupied. Otherwise, they would start grumbling, disgruntled, and things. So what they did was they just said, "Go, keep conquering, keep going, keep going, keep going." And at some point, you have to एक दिन stop. बढ़ गया. Yeah. एक दिन लंबा हो गया, इलास्टिसिटी ज्यादा हो गया और टूट गया. बस बड़ा Right. सिंपल है. ओके. पर बात यह है कि इसके एम्पायर, इसके काल में दो रिलीजन्स इसी के एम्पायर के अंदर पैदा हुए थे, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. And we all know how the Roman system tried to stop these, religions from spreading, but they still spread. Right? That's important. Okay. Right. The next empire we'll take is the Mongol Empire. Right? Sorry. Yeah. This is the Mongol Empire. Mongol Empire has been considered, at least I've considered it as the second superpower, the olden variety of thing. When the Mongol Empire was there, जो भी इसके अंदर ब्राउन में दिखाया गया है इसके अंदर, this was the Mongol Empire. And this was the superpower. And this superpower was probably the biggest superpower in the history of the world. इतना एरिया किसी और सुपर पावर ने कंट्रोल नहीं किया. ओके. इट वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्पायर. बात यह है कि जस्ट मिलियन मंगोल्स conquered vastly larger population and empires. ये इन्होंने क्या किया, एम्पायर को, एक बाकी एम्पायर को कॉन्कर करते गए और उस राज्य को अपने राज्य में समेटते गए, राइट, थ्रू अरेंजमेंट्स. And it was not a unitary empire as normally such, but a vast agglomeration of widely different territories held together by military domination. तो ये बात दोबारा आता है, सुपर पावर होने के लिए मिलिट्री डोमिनेशन की जरूरत है. Its all-conquering military machine was based on outstanding tactics, mobility, utilization of technology of the conquered people and logistics. क्योंकि इतना लंबा चौड़ा एम्पायर था, बिना लॉजिस्टिक्स के ये चल नहीं सकता था. और इन्होंने जहां जहां गए वहां का जो टेक्नोलॉजी उन्होंने अपना लिया. सो दे showed a lot of innovativeness in absorbing technology, in absorbing cultures and having a set of this thing. ये अगर हम देखेंगे, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आज जो चल रहा है चाइना का, इसमें ये फर्क है. The Belt and Road Initiative does not absorb other cultures. It does not absorb technology from others, except the China does IPR thrift from other countries, but not through the Belt and Road. Okay. At each stage along the Silk Road was conquered, and the empire, as each stage along the Silk Road was conquered, the empire expanded. The empire expanded by the original Silk Road. जो आज के दिन चाइना वाले जो हैं, दे वांट टू रेप्लिकेट द सिल्क रोड. ये सिल्क रोड कहां से कहां चला, अगर आप देखेंगे तो फ्रॉम द ईस्टर्न एंड व्लादिवोस्टॉक ऑलमोस्ट अप टू सर्बिया, इतना लंबा चौड़ा इन्होंने सिल्क रोड बनाया. और उसी सिल्क रोड के ऊपर आज के दिन चाइना जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर रहा है. बेल्ट है जो रोड है, एक्चुअली रोड जो चाइना वाले बोलते हैं वो इज अलोंग द मैरीटाइम रूट्स.
Okay, the Silk Road was the economic backbone of the Mongols. यही चीज चाइना वाले आज कॉपी करना चाहते हैं. From 1206 till about 1294, Genghis Khan and his heirs ruled an empire that included most of Eurasia, much of the Middle East, parts of Eastern Europe, China, and Russia. इतना बड़ा, almost at that point of time, whatever the world was, after all, उन दिनों में no one had gone to America. That part of the world was not known. So he had, this was a superpower which ruled almost the entire thing. At its peak, it stretched from the Danube to the Sea of Japan and from the Arctic to Cambodia. Cambodia is Cambodia, covering 22% of the Earth's land area. And this 22% of the Earth's land area, when you say, it includes America and this thing. So if you take that out, the percentage would be probably somewhere near 40-50%, or probably even more. It held sway over 100 million people. Okay, and it is often referred to as the Mongol World Empire. Okay, now why did this empire collapse? Why did this yeah, we'll come to that. The question is, why did this superpower collapse? It collapsed because there was no succession. It collapsed because the empire was not unitary in nature. When Genghis Khan and probably his son or the third generation passed away, it was a very brief superpower. It didn't last even a century, just about 90 years old. When that passed away, the empires and the kingdoms जो इसके हिस्से थे वो टूट गए और अलग अलग होके बिखर गए. तो ये है ये second superpower of the earth, which is the Mongol Empire. Yeah, please पूछिए आप. Yeah, so one of the things I've heard, General Ravishankar, and you'll know more than me on this, an army marches on its stomach. One of the things that the Mongols figured out, I've read it somewhere, I don't remember the exact reference, is that they used to carry with them some sort of millets like grains. And what they would do was, in order to, you couldn't consume it right away, but they had to soak it. But they needed something else to make it a little bit tasty. You know what they used to do? They would cut on the horse. They would just make a small incision, and the horse would And bleed blood. They would pick up that, they'll mix it with this food, and they would eat it. And the eat it. horse, if you just have a very minor scar, it will heal over a few hours. And the horse always, there was plenty of grass going around. So this is how they could, eat all the time or wherever they wanted. Steppes, tundras, it didn't matter. They had the Yeah, food on their own. This is on their supposed to be own. one of the biggest positives there. Yeah. You're completely right. That's why I said, मैंने बोला था लॉजिस्टिक्स. इनका Yeah. लॉजिस्टिक्स जो है वो बहुत ही सॉलिड था कि टू कंट्रोल इतना बड़ा. अब देखिए यूक्रेन वॉर हो रहा है. यूक्रेन वॉर में क्या निकल आया है कि रशियन लॉजिस्टिक्स सफर्ड. रशिया डिडंट हैव लॉजिस्टिक्स टू प्रोसिक्यूट अ वॉर जस्ट ओवर 200-300 किलोमीटर्स. और इसके तहत अगर आप कंपेयर करेंगे द मंगोल एम्पायर which from Danube to Vladivostok, right, north from the Arctic region right down to Cambodia, it controlled the whole thing without logistics, without tactics, without a military machine, which was this thing. It couldn't have done. So इसीलिए ये is you see this great power, which that's why I felt this was a super power. आपने बीच में जिक्र किया था नेपोलियन के बारे में. Napoleon had a lot of power. His military mission was great, but he never controlled area like which these people have controlled. True. It was only Europe, some part of Germany, and he went up to Russia. He was kicked back, and he lost. So he never made France into a superpower. Okay, so we'll take the next superpower, and that is your British Empire. The British Empire, when existed, it existed like this. जो भी pink areas हैं इस इलाके में, in this map were all the British Empire. It was probably the largest empire which the world has seen, and it was the greatest superpower the world has seen. Right? Now we'll just go over what all went into this superpower. Like I have written, one of the largest empires in history,
इट स्टार्टेड, ये शुरू हुआ कॉलोनीज में जो अमेरिकाज में इन्होंने स्थापित किया था. कॉलोनीज बेसिकली इन द न्यू फाउंड लैंड मेन रीजन, राइट. वहां से शुरू किया था इन्होंने कॉलोनीज स्थापित करना. एंड इट एक्सपैंडेड थ्रू ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन. और इसमें क्या चीज है कि ये फैलाव कैसे हुआ ब्रिटिश एम्पायर का. इसका फैलाव जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जरिए हुआ. टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के माध्यम से ब्रिटिश एम्पायर को काफी टेक्नोलॉजी हासिल हुआ. और उस टेक्नोलॉजी के तहत और इन्होंने अपना दे यूज्ड इट फॉर देयर मिलिट्री पर्पसेस, और दे exported this technology to their colonies and ruled those people. Okay, next point is a very important point. They created trading posts for good exchange. जहां जहां गए ये एक कहावत है, the flag follows trade. ट्रेड गोज फर्स्ट. जहां भी जाता है उसके पीछे पीछे झंडा आता है. ठीक है, पहले ये गए व्यापारी बन के, उसके बाद जब व्यापार इनका फैल गया और उस राज्य में इन्होंने कब्जा कर लिया और वो झंडा लहरा दिया उधर. ओके, और गुड्स एक्सचेंज और इससे शुरू किया और इन्होंने कब्जा कर लिया पूरा. और ये जो एम्पायर है, इट इम्पैक्टेड कल्चर्स, लैंग्वेजेस एंड लीगल सिस्टम्स थ्रू आउट द इट्स एम्पायर. दैट इज व्हाई इट्स अ सुपर पावर. इट imposed common cultures, languages, and legal systems throughout. Right? Okay. It ruled India under the British Raj till 1947. And when did that fellow Vasco da Gama come? He came in 1640s. Okay. And somewhere about 100 years later, the first British presidencies were set up in Bombay presidency, Madras presidency, and Calcutta. And slowly वो फैल गई है. They fought opium wars with China over trade. They established a global network. They also went and colonized Africa. But the decolonization started after World War II. Now the legacy of this empire and of this superpower, it includes benefits and controversies. बहुत लोगों को हमें बेनिफिट भी मिला है ये इसका राज का, और इसके बारे में बहुत चर्चा भी है और कंट्रोवर्सीज भी है. और द ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश एम्पायर का जो बदलाव है वो आज के दिन हम क्या देख रहे हैं वो कॉमनवेल्थ है. कॉमनवेल्थ 50-60 साल पहले इट वाज वेरी स्ट्रांग. आजकल तो वो काफी इट हैज बिकम ढीला और इसका पावर कुछ रहा नहीं और धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि इसके जो सक्सेसर स्टेट्स जो हैं वो पावरफुल होते जा रहे हैं. और एक सक्सेसर स्टेट तो इंडिया ही है, राइट. अगर आप देखेंगे तो इसके सक्सेसर स्टेट्स विच आर देयर इन अफ्रीका आर आल्सो राइजिंग. और कुछ हद तक चाइना भी एक तरीके से बोल सकते हो इट वाज अ सक्सेसर स्टेट, दो इट नेवर रूल्ड चाइना. इट did control a large part of China along with USA. Okay. और अगर और थोड़ा विश्लेषण करने की जरूरत है ब्रिटिश एम्पायर का, क्योंकि इसका प्रभाव काफी रहा है दुनिया के ऊपर. इट इज द फर्स्ट मॉडर्न डे सुपर पावर वेयर इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड सॉफ्ट पावर वेयर इक्वल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. आजकल बोलते हैं हम कि भाई इकोनॉमिक पावर इज मोर इम्पोर्टेंट, जैसे क्लिंटन ने बताया इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, राइट. एंड बट मिलिट्री पावर वाज ऑलवेज देयर. बाकी पिछले दो सुपर पावर्स देखेंगे तो द इकोनॉमी वाज नॉट इम्पोर्टेंट, इट वाज द मिलिट्री व्हिच वाज मोर इम्पोर्टेंट, द पॉलिटिक्स वर मोर इम्पोर्टेंट, कॉन्क्वेस्ट वाज मोर इम्पोर्टेंट. आधुनिक सुपर पावर जो फर्स्ट सुपर पावर ब्रिटेन है, उसमें द इकोनॉमी, मिलिट्री एंड सॉफ्ट पावर वेर ऑल केम टुगेदर. दूसरी बात है द ब्रिटिश एम्पायर कंप्राइज्ड ऑफ डोमिनियंस, कॉलोनीज, प्रोटेक्टोरेट्स, मैंडेट्स एंड अदर टेरिटरीज रूल्ड और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूके. तरह तरीके तरीके अलग तरीके से इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया. इट वाज नॉट स्ट्रेट डोमिनेशन. इट वाज द लार्जेस्ट एम्पायर एंड फोरमोस्ट ग्लोबल पावर फॉर ओवर अ सेंचुरी. 100 साल तक. उससे पहले भी था, उसके बाद भी था, पर एक 100 साल तक सिर्फ ब्रिटेन का बोलबाला था पूरा दुनिया में. In 1922, just after the First World War, it controlled 1/4 of the world's population or 1/4 of the Earth's land mass. ये बहुत बड़ा नफरी है,
1/4 of Earth's landmass उन दोनों में. In the empire, there was sunlight throughout at some place or the other. That is why the sun never set in the British Empire. ये बोला जाता है कि भाई ये ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी डूबता नहीं था. क्यों? जब ऑस्ट्रेलिया में सूरज उगता था तो कनाडा में क्या है वो डूबता था, और कनाडा में जब डूबता था ऑस्ट्रेलिया में उगता था सूरज और रोशनी आती थी, तो इट वाज डार्क इन द अदर साइड. पर पूरा साम्राज्य में कहीं ना कहीं सूरज था, daylight था. That is why the sun never set in the British Empire. It had the largest military of all times. ये इसका मिलिट्री जो है ये आज के चाइना, रशिया, इंडिया, अमेरिका ये सब मिला लो तो इसका तकरीबन दुगना था. Its military power was based on a powerful navy with which it could strike and control strategic checkpoints like Suez, Malacca, Aden, Hormuz और Gibraltar. और ये बात इज इम्पोर्टेंट टुडे ऑल्सो. आप देखेंगे सुपर पावर्स वो होते हैं जो आज के दिन जितने दुनिया में चोक पॉइंट्स हैं उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं. आज के दिन अगर हम देखेंगे तो किसी का कॉलोनी नहीं रहा, किसी का एम्पायर नहीं रहा, पर पावर प्रोजेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. इसका इकोनॉमिक पावर प्रोजेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. तो ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटेन एज ए सुपर पावर और आज के सुपर पावर में फर्क क्या है? द इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड सॉफ्ट पावर आर देयर, बट द सेकंड पॉइंट इज द डोमिनियंस, कॉलोनीज, प्रोटेक्टरेट्स एंड मैंडेट्स एंड अदर टेरिटरीज आर नो मोर देयर. दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सुपर पावर्स, पुराने जमाने के सुपर पावर्स और आज के जमाने के सुपर पावर्स के बीच में. ओके, दूसरी बात यह है कि ये ब्रिटिश एम्पायर से ही नेवी का बोलबाला बढ़ गया है इन पावर प्रोजेक्शन. ये अल्फ्रेड टेयर महान वगैरह जो नेवी के विशेष थिंकर्स थे, who postulated the naval form of power projection and all that came out from the British Empire. They learned it from the British Empire. Yeah, please बोलिए. Yeah, so a couple of things, because we are getting a lot of things and I'll forget afterwards. Yeah, बोलिए. The first thing is, the American, the British set foot on America because, remember Columbus came there in the early 14th century or 15th century, early 15th century. For 1497, Vasco da Gama landed in India, in Goa. Yeah. Maybe Kochi, I don't remember exactly. But the time was, it was a good 50 years after Columbus did. But the British did not go there up until I think 1610 or 1620. Right about the same time they came to India also. So the interesting thing was, first 12 colonies were formed, and then the 13th got formed because Virginia split itself into two at the time of Civil War. That is 1800. So that let's leave. The more important thing is Benjamin Franklin. He's considered one of the greatest inventors who came in, and he did some amazing things. And then Edison is after that, 100 years or so after that. But Benjamin Franklin writes how the British were protecting some of the Industrial Revolution products, such as the printing machine. The British would be very, very careful to not allow any printing machine in any form or shape to leave its shores. And the United States wanted it badly because they had this huge land and they needed to have, to run the states, they needed something like a printing machine. So they actually deputed one guy who learned it by heart, comes back and recreates it. Yes, यही बात आप सही बोल रहे हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी, उस समय का टेक्नोलॉजी वाज प्रिंटिंग मशीन टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज प्लेड अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन पावर. जिसके पास टेक्नोलॉजी है ऑफ दैट टाइम, उसके पास पावर था. Yeah, you made a very important point which you're making. Yeah. Okay. And if you could go back to your slide deck. You finish your thought and then go there. Yeah. No, I'll go back. बोलिए. Yeah. So in all this. Yeah, बोलिए. Yeah. So in why did the British realize that the Navy was more powerful, that it had the power? Sir, you may have seen this series of movies called Pirates of the Caribbean. Right.
So if you go back and look at what the British used to do, the Spanish had the Armada. Spanish fleet would go and Mayans, Incans, all these civilizations. They would go there, kill those civilizations, rob them of the gold and the wealth that they had, and then they would fit them on their ships, and they would come back to Spain. Well, what Sir Francis Drake did was he would lay in wait for the ships to load up and come, and there would be some military ships to try and guard this loot, and he would get rid of those, decimate those, and then he would go and attack the main ships carrying the cargo. If you look at that, so that's when the British realized that navy is what is going to give them the power. My 2 cents, sir. You can agree with me or या disagree with me. ये बात सही है आपका. नेवी gave them the power, और नेवी के जरिए ही goods could be transported easily. Goods could be transported over long distances very fast, both ways. So the sea routes of communication became very important during the British times, and that is why the British Empire expanded. It expanded all the way up to China to a large extent, and after all, it had Hong Kong was a British colony. Okay. Now, because of the navy, your next point hai, it enabled unfettered trade and made UK enormously wealthy. In 1870, the British Empire had the largest percentage of world GDP. It was 35.9%. Almost 40% of the world GDP was for the British Empire. In 1938, okay, as late as 1938, it still had the second largest GDP after USA. It was insulated and unassailable by continental powers, with the Atlantic on one side and the English Channel on the other side. And ये important है, because the British Empire, or the seat of the British Empire, the British Isles, were insulated. It could not be assailed by the sea, right? It remained a superpower for a long time, and that is the feature of USA also. And that is why today China is struggling. Its two ocean theory, it wants two seaboards, comes from this fundamental fact that unless China has two seaboards, it cannot be a superpower. We'll discuss China a little later. Yeah. Okay? Right. Now we'll talk of USSR. No, the USSR was the briefest superpower. It was founded on the erstwhile Russian Empire. It rose to be a superpower just after the end of the World War II, and till it put up the Iron Curtain and all that, and it disintegrated due to the Cold War, 1991. It just one day overnight vanished. During its time, there was global bipolarity, whose poles were capitalism and communism. It gave an alternate vichardhara to the world. ये यूएसएसआर जो सुपर पावर था, इसने विचारधारा ही नहीं है, एक ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी दिया था फॉर पीपल टू फॉलो, एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल टिल द कोल्ड वॉर. और यूएसएसआर जो है बहुत बड़ा था, वाज ह्यूज एंड डिफिकल्ट टू नॉक आउट, क्योंकि नेपोलियन ने भी ट्राई किया, हिटलर ने भी ट्राई किया, मॉस्को तक पहुंच गए, और यूएसएसआर को कब्जा नहीं कर पाए. नाउ इसका जो शक्ति जो होता है, it comes from the expansive resource-rich landmass fueled, which fulfills Mackinder's heartland theory. Whoever controlled the Eurasian heartland could control Eurasia and thus the world. It is against the Mahan's theory of control of the nations. Or as a superpower, even today, Russia is resource rich, energy surplus, and this has come from, it's a legacy which has come from long, and that was a great strength of USSR as it existed as a superpower. It rivaled USA militarily. Technologically, it had tremendous technology which could match the US technology. It could match USA economically and in soft power. Communism propelled it to superpower status and ultimately caused it to decline also, and its demise. This is a very important point.
बिकॉज ऑफ कम्युनिज्म इट रोज, बड़ा हो गया, सुपर पावर बन गया। जिस दिन कम्युनिज्म बिखर गया यूएसएसआर के अंदर, यूएसएसआर ही बिखर गया। और इसमें इसके लिए चाइना को एक सबक है। चाइना जब तक कम्युनिज्म पे चल रहा था वो सुपर पावर नहीं था। जब चाइना ने सुपर कम्युनिज्म छोड़ दिया और रिफॉर्म्स इख्तियार किया डेंग जियाओपिंग का, तो सुपर पावर होने का अंदेशा था। पर अभी वापस जी जिनपिंग चाइना को कम्युनिज्म की ओर ले जा रहा है। परसों ही हमने बात किया अबाउट आइडियोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट, दैट इफ कम्युनिज्म प्रिवेल्स इट माइट ब्रेक। नाउ रशिया inherited USSR's global influence. Russia is still a power, but falls short of being a superpower since it could not reinvent itself as USA has done repeatedly. Well, how has USA reinvented itself repeatedly? I'll just talk about it. Okay, USA जो है is a current superpower. इसमें दो राय नहीं है। So, बहुत लोग बोलते हैं कि it is going down, ये वो, I don't believe it. It has got a huge population. It has got continental sized resources. Territory is rich. It's located on two oceans, the western board and the eastern board, Atlantic and Pacific. Unassailable. Barring Pearl Harbor and 9/11 strikes, it has never been attacked. It enjoys conventional military dominance in air, land, and sea, and it can control all the world's major sea routes and choke points. Even today, okay, these are the choke points. Sorry, I'll show you the choke points. These are the choke points. Today, USA has the capability of controlling all choke points, right? Much like what the British Empire did at that point of time. Okay, so okay, it operates 516 military installations in 41 countries around the world, including 40 that they are large, medium bases. These are the bases it controls all over the world. You see the effect in this map जो रंग में है, अलग अलग रंग में, these are the installations and bases all around the world. अगर आप चाइना के इर्द गिर्द देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और मलेशिया में इनका बेसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनके बेसेस हैं, गोवा में इसका एक मेजर बेस है। तो चाइना को घेर के रखा है। इसी आधार पे अगर हम देखेंगे तो चाइना कहीं नहीं है। इसका एक बेस है जिबूती, उसके अलावा कुछ नहीं है, राइट? इसके बेसिस यूरोप में बहुत हैं, ओके। और अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इट हैज बेसिस इंक्लूडिंग इन द इंडियन ओशन एंड डिगो गार्सिया, ओके। It is economic extensive alliances including NATO, ANZUS-PAC, bilateral military agreements with Japan and South Korea and Five Eyes intelligence. Okay, economically very strong. The USD is the reserve currency of the world. And most importantly, it has trust of most rich and affluent nations. ये जो वेस्ट हम बोलते रहते हैं, they are all the rich and the affluent nations. ये इसके ऊपर, they all trust USA. Economic power is non-finite and non-territorial. क्योंकि इसका economic power through US dollar, which it has weaponized, it has power all over the world. Now, USA has leveraged technology as a currency of power. जो आप पहले भी बोल रहे थे, printing press. आज का जो technology है, USA has leveraged it and it is still continuing to leverage it. Okay. More importantly, space, nuclear and information technology has turned it from an energy neutral country to an energy surplus nation. We must understand this is the only superpower which is not dependent on energy of the Middle East. It exports energy. It's got enormous soft power, culture, education system, political affiliations, aid programs, overseas bases, Hollywood, and its huge network of MNCs. Apple, Microsoft, जितने भी IBM, सारे देख लो, सब पता है. KFC, McDonald's, Tim Hortons, ये Tim Hortons तो कनाडा का है, right? ये सब स्टारबक्स तो हर दुनिया के हर कोने में मिलता है. इट्स ऑल पार्ट ऑफ द सॉफ्ट Jeans, पावर.
right? Genes, yeah, genes, right? Uh, able to reinvent itself after every setback, ये बहुत important है. इसका setbacks काफी हुए हैं, but it has come out after every setback as a greater power. Okay, be it economic setbacks like depression of the 1930s or the global meltdown of 2008 or military setbacks like Pearl Harbor or Twin Tower attacks, it has been able to ward off competition from USSR and emerge bigger. Not only USSR, anyone. Even now, after the whole thing, if you see, it has emerged bigger and bigger every time. Its military, diplomacy, and technology powers are still intact. People talk of decline. We are living in a different world. It also overcame the pandemic. It emerged stronger from the pandemic. You look at China, China emerged weaker after the pandemic. People don't understand this. And these could be leveraged and its economy back to primacy. Okay. So this is how America is today and will remain a superpower for a long time till the systems are broken and there's an alternate system which doesn't come in. Okay. So we've spoken of military installations, we've spoken of all this, we've spoken of all this, ये सब हमने बात कर लिया. अभी हम चाइना के बारे में बात करते हैं. अगर हम देखेंगे जब चाइना उभरना शुरू हुआ है as it started rising at the end by around 2008, 9, 10, इनको ख्वाब आने लगे कि भाई हम अगले सुपर पावर बनेंगे और यही नहीं हम यूएसए को हटा देंगे एंड वी विल एस्टैब्लिश ए साइनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर. और इसका जो पहले कदम है जी जिनपिंग का वो है बीआरए. अगर आप बीआरए को थोड़ा परखेंगे तो ये हमें पता चलता है बीआरए वाज अ मेगा कॉम्बिनेशन ऑफ यूएसए फॉरेन एड प्रोग्राम्स, मंगोल्स एम्पायर सिल्क रूट एंड द ब्रिटिश एम्पायर मॉडल ऑफ एस्टैब्लिशिंग ट्रेडिंग पोस्ट प्रायर टू कॉलोनाइजेशन. अगर ये पैंडेमिक नहीं आता और ये बीआरए जिस तरीके से चल रहा था वो चलता तो अभी तक बहुत देश इनके कॉलोनी बनने के लिए तैयार हो जाते. आप श्रीलंका देख लीजिए, इट इज ऑलमोस्ट अ कॉलोनी. आप पाकिस्तान देख लीजिए, ऑलमोस्ट अ कॉलोनी. पर आज के दिन, आज के युग जो है थोड़ा अलग युग है, बिल्कुल कॉलोनी बन नहीं सकता. पर इसीलिए ये कॉलोनी से इट इज जस्ट अ लिटिल लेसर. वी एवरीवन नोज दैट पाकिस्तान इज अ वेसल स्टेट ऑफ चाइना. बट बात ये भी मानना पड़ेगा कि BRI has not been so successful as it was envisaged. Right? So that is why I keep saying the BRI's failure is a good thing for the world. And to some extent, the pandemic has helped us, you know, fail the BRI. And we've been saved from a Chinese-centric world order. Right? Though Xi Jinping has not given up his ideas. ये है BRI का फैलाव. तो फैलाव तो काफी है जिस तरीके से बाकी देशों को देख रहे हो. राइट? जो बाकी एम्पायर्स जो इन्होंने बाकी एम्पायर्स ने तो कब्जा कर लिया था, बट बीआरआई हैज नॉट बीन एबल टू डू दैट, बट इट हैज had lot of influence on all these areas which is slowly going down. Some people argue that China has got lot of influence, but my way of looking at it is आप देखिए रशिया यूक्रेन वॉर में इसका इन्फ्लुएंस कम रहा. मिडल ईस्ट वॉर अभी जो इसराइल और गाजा में चल रहा है इसमें भी इसका इट्स a side actor. Actually, I would suggest all of you who feel otherwise should see yesterday's podcast of mine on Qatar, where I argued that Qatar is the gas superpower and a geopolitical Switzerland. उसको देखिए, you'll know why USA will remain a super for a long time to come, and China is nowhere near it. Okay, when you look at China aims to be a superpower. It's got its initiatives on security, global security initiative, global development initiative, civilization initiative, all these to establish a Sinocentric order. There's no doubt, इसका ambition है, पर क्या बन सकता है? इसके problems बहुत हैं. पहले तो हम श्री अय्यर जी के साथ हम ये देख रहे हैं कि इसका 100 ईयर मैराथन तो खत्म हो रहा है. आइडियोलॉजी के बारे में बात कर लिया हमने. डेमोग्राफी तो
घट रहा है, और इसके इकोनॉमी के बारे में भी हमने बात कर लिया। पर एक कुछ और चीजें हैं। चाइना हैज एन अनफेवरेबल मिलिट्री ज्योग्राफी। It is continental size but poor resources. It is assailable from all directions. Right? It doesn't have a good maritime outbound outlook. Okay. Now the Great Wall actually is a testimony that it has constructed ocean access and it faces threats from the north historically, and that continues. Whether you like it or not, it still has a problem with India and faces a threat from India. It still has a problem on its maritime boundaries from continental powers and great powers and superpowers, like and powers like Korea, Japan, and all these, along with USA. Today, its relations with Russia are good, but tomorrow it could go bad. It is not secure. It is assailable, unlike USA, which is not assailable. That is why it seeks a two-ocean access. It is not able to get it through Pakistan. Okay. Next point, its military is not so powerful as we think, because its military must defend the nation, prop up the party, and parry competitors. देखिए, इसका एक डिफेंसिव एलिमेंट है, एक कंटिन्यूटी एलिमेंट है कि सीसीपी को खड़ा रखना है, फिर जाके दुश्मनों के साथ लड़के बाकी दूर दराज इलाकों के ऊपर कब्जा करने की ये आता है, एंड देन कंट्रोल इंटरनेशनल चोक पॉइंट्स एंड गेट्स. इट स्टिल सो फार इट डज नॉट हैव दैट कैपेबिलिटी. वो क्षमता है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं. चाइना नीड्स एन आउटसाइज मिलिट्री विद इंटरनेशनल प्रेजेंस. तो चाइना मिलिट्री पावर हैज सीरियस लिमिटेशंस. अगर ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है मिलिट्री के ऊपर, ये प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा जो रोमन एम्पायर. Yeah, overstretch, over expansion of military, which will collapse the empire. Now, China is betting on its economy to attain superpower status that has stagnated. वो तो इसका इकोनॉमी सीमित हो गया. कल ही मैंने बात किया, तो परसों बाद हमने बात किया कि इसका जो इकोनॉमी कभी यूएसए का इकोनॉमी को पार नहीं करेगा. और ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये जापान काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का एनालिसिस है, जो उन्होंने 2 साल पहले किया था. ठीक. और अगर ये नहीं है, स्टैग्नेट हो गया, और तो प्रॉब्लम है. फिर सुपर पावर कैसे बनेगा? आफ्टर ऑल, एट सम पॉइंट you need a large economy today, and an economy which can impose itself on the world to become a superpower. और ऊपर तो और ये बीआरआई से जो आरओए आना था वो बिल्कुल नहीं है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाइना इज फूड सिक्योर एंड एनर्जी डेफिशिएंट. कोई भी सुपर पावर का आप देखिए, इट वाज एनर्जी सफिशिएंट एंड फूड सफिशिएंट, whereas China today is food insecure and energy deficient. और ये दोनों चीजों के बारे में हम क्लाइमेट के बारे में जब हम बात करेंगे, चाइना का जो अगला है, जो हम 7 तारीख को करेंगे, उसमें क्लियर आ जाएगा. इसका पॉपुलेशन इज एजिंग एंड श्रिंकिंग. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, द स्टेट मस्ट गारंटी प्रॉस्पेरिटी टू पीपल इन रिटर्न फॉर सैक्रिफाइस्ड फ्रीडम्स. All superpower populations had affluent lifestyles, barring USSR. और यूएसएसआर में लोगों का एफ्लुएंट लाइफस्टाइल नहीं था, कोलैप्स हो गया. चाइना नीड्स ह्यूज रिसोर्सेस इंटरनली व्हिच इट डजंट हैव. ओके. चाइना नीड्स टू जनरेट ट्रस्ट. कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं रखता. कोई आज के दिन में तो कोई गरीब देश या अमीर देश, कोई चाइना के ऊपर विश्वास नहीं रखता. However, it is emerging as a root cause in many disputes. जितने disputes हैं वेस्टर्न पैसिफिक्स में, उसका मूल कारण चाइना है. Its reputation on IPR theft and technology transfer is horrendous. China displays selfishness with no concept of global commons. It has blatantly repudiated international treaties, law, and rules-based order in South China Sea and in Hong Kong, and it has not lived up to its promises. More than alienation, it has generated hate in many countries. Right? तो अगर ये आंकड़ा लगाएंगे, तो चाइना बिकमिंग अ सुपर पावर इज क्वाइट फार अवे. ग्रेट पावर रहेगा, इट विल बी वन ऑफ द पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, बट क्या विल इट बी अ सुपर पावर? नहीं.
राइट। और ये जैसे दोबारा मैं बता रहा हूँ, इट हैज नॉट हैड एन इम्पैक्ट इन यूक्रेन, इट हैज नॉट हैड एन इम्पैक्ट इन द मिडल ईस्ट। अगर इसके अगेंस्ट इंडिया को देखेंगे, वी हैव हैड ग्रेटर इम्पैक्ट इन यूक्रेन एंड रशिया, बोथ हैव लिसन टू अस। जब हम ना, हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ये युग लड़ाई का युग नहीं है, ही सेड दिस टू पुतिन, किसी और ने नहीं बोला। सब लोग हमारे ओर देखते हैं। Why India, how India is risen, and why India's rise is unstoppable is a program which I'll do down the line. But I'm going to talk about this India's rise in Jaipur Dialogues on 5th. And वो जो वीडियो है मैं जारी करने वाला हूँ हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, जितना शुद्ध हिंदी मैं जानता हूँ वो उसमें मैं जारी कर रहा हूँ 6 बजे 5 तारीख को। जो वहां लाइव बोलूंगा वो तो बोलूंगा, वो वहां इंग्लिश में बोलूंगा, और इस गनर शॉट में हम हिंदी में बोलेंगे। और एक्चुअली मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया उसको, राइट। तो बात ये आता है कि क्या इस इंडिया सुपर पावर, इंडिया सुपर बनने का इसके दोबारा चांसेस है? काबिल। काबिलियत तो है, चांसेस हैं, टाइम क्या लगेगा। देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी by about 2030-35, right? जब ये थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, then if it any economy which has got about 7 to 10 trillion dollars, $7 trillion is what people expect by 2030। और ये वो भी, ये बीजेपी का बात नहीं है, ना ये गवर्नमेंट की बात है, ना ये मेरा अनुमान है, ये बात भी जर्मनी के थिंक टैंक्स ने, एक थिंक टैंक का पाथफाइंडर रिपोर्ट है उसमें भी बताया गया है, और एक फ्रेंच कंपनी का भी रिपोर्ट है, एक मैकेंसी का रिपोर्ट भी है, और ये जेसीईआर का भी अनुमान है कि विल बी अराउंड $7 to 10 trillion in the time period between 30 to 35। The day you get that kind of a thing, you are in serious business to be a great power, which you actually already are in a long way. What is important for us? Important is to understand, or we have still a demographic dividend. We are food secure, not only food secure, we are food surplus. You have a strong military. You have to strengthen this military more if you want to become a superpower. Already you have the capability of controlling, of being the net security provider in the Indian Ocean region. You can't go beyond that. But in the next 5-6 years, if you are strong enough to control IOR, then in the next 15-20 years, you can think of beyond that. You are a great democracy. Today, one country, one party is leading. Tomorrow, another party will come. Yesterday, there was another party. Today, there's another party. The day after tomorrow, there'll be another party. Why? Because we have empowered the poorest Indian. The poorest Indian has the power to change his government at his will. And every 5 years, any government, irrespective of who it is, has to go in front of the poorest Indian and put his hand out and say, मेरे को वोट दे दो। वो तरीका जो भी अपना है वो अलग बात है पॉलिटिकली, बट उससे भीख मांगना पड़ता है कि भाई मेरे को सत्ता में वापस ले आओ। दैट डेमोक्रेटिक पावर ऑफ दिस नेशन इज समथिंग पीपल डोंट अंडरस्टैंड। अगर आप देखेंगे तो जो हमारे देश के अंदर जो सत्ता बदलाव हुआ है, इट हैज इन द पास्ट 75 years it has been much more peaceful than even USA, right? So if अगर ये देखेंगे तो we have chances of becoming a superpower. But if you look at our internal problems, if you look at our poverty, if you look at certain ethnic and religious problems in our nation, right, and the lack of development, the lack of our ability to harness technology for ourselves. We are very good at making technology for others. How about ourselves, right? And our inability to ensure that we have a very strong military which goes along with our other forms of progress. This is a problem which we've had for the past 75 years. And let's not have any doubts. No government has been able to solve this problem, including the present government, that our military development and progress has not kept pace with our economic progress.
Till such time you don't have a strong military, you'll never be a superpower. So ये चीजें हैं जो you know कहता है कि can India become a superpower? Yes. Is India a superpower? No. Will India become a superpower in the near future? No. Let's be very clear. Not for the next 5-10 years. Will it become in 15 years? Not necessary. But we could be on that road. Right? So ये था मेरा आज क्या थोड़ा लंबा हो गया, but सब्जेक्ट ही लंबा है. मैं and it is full of facts and figures. It's not तुक्का